बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची में होने वाले प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 से सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर को। और इस वीडियो में हम इस पेपर के जो 40 MCQs हैं उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, और जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीचेस सेक्शन सी में उसका भी सोल्यूशन आपको बताएंगे। और अगर हम सेक्शन बी को सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये वीडियो तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों या होम इकोनॉमिक्स के हों, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिस करते हुए सुने काम करेंगे तो ज्यादा आपको इसका एडवांटेज होगा। शुरू करते हैं एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं। जितने भी कॉलेजेस के और कोचिंग के मैंने पेपर्स को सॉल्व किया है उन सबका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाकर उन तमाम तर पेपर्स के लिंक्स आप देख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज को। Albert Thomas described this person as a rich imagination working through a flexible pen. Butler, Sir James Jeans, John Hampden, and John Galsworthy. This poem is written in blank verse. Music when soul voices die. The Man of Life for Pride, The 7 Years of Man, The Solitary Reaper. This poem is written in dramatic monologue form. An Essay on Man, Endymion, Ulysses, and Music when soul voices die. पॉज कर लें वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर्स लिख लें, और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। So here are the right answers. पहला MCQ है, Albert Thomas described this person as a rich imagination working through a flexible pen. He is Sir James Jeans. और ये MCQ पूछा गया है चैप्टर 9 से, जो बुक का हमारा चैप्टर 9 है जिसका नाम है An Astronomer's View of Life। उससे ये जो है आपको MCQ दिया गया है। This poem is written in blank verse form, The 7 Ages of Man. This poem is written in dramatic monologue form, and that is Ulysses. Hopefully के नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं हम आगे। फोर्थ MCQ देखते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारा नॉवेल है द प्रिजनर ऑफ जेंडा, उसके तमाम तर चैप्टर्स के MCQs along with the solution of past papers, ये तमाम तर वीडियोस देख सकें, तो नहीं तमाम तर वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर आ रही है आई बटन में, वहां से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। Each stanza of The Man of Life for Pride is of 4 short lines consisting of this syllables, 4 syllable, 5 syllable, 6 syllable, 7 syllable। syllables लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। Samson is originally a Hebrew word and it means like the tiger, eagle, son, warrior. He was the father of Samson, Johnson, John, Manoah, Jack. Samson Agonistes was written in 1670, 1671, 1672, 1673. Dresden, mentioned in The Prisoner of Zenda, is the city in Germany, France, Austria, Britannia. According to Alexander Pope, this springs eternal in the human breast, courage, honesty, hope, fear. पॉज कर लें वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर्स लिख लीजिए या सोच लीजिए, और फिर उसके बाद इसे रिज्यूम करके अपने आंसर्स देख लें। Each stanza of The Man of Life for Pride is of 4 short lines consisting of this syllable, 6. Samson is originally a Hebrew word. It means like the sun. He was the father of Samson, Manoah. Samson was written in 1671 when Paradise Regained was published, क्योंकि ये पोएम उसी के अंदर मौजूद थी। Dresden, mentioned in The Prisoner of Zenda, is the city in Germany. According to Alexander Pope, this springs eternal in the human breast, and that is hope. Hopefully के सारे MCQs आप देख चुके होंगे, मार्क कर चुके होंगे। चलते हैं फर्दर MCQs की तरफ। The duration of coronation ceremony was 2 hours, 3 hours, 30 minutes, 60 minutes. The dialogue "Say I'm Christian" or "Say I'm jealous" was spoken by Princess Flavia, Countess Helga, Moma, Rose. In An Essay on Man is addressed by Pope to Lord Charles Andrew Bolingbroke. William Maxwell was stabbed to death by Fred's Sapt Rissendal Rupert. An Essay on Man is in fact an essay, poem, novel, play. The word annals mentioned in an elegy written in a country churchyard means secrets, facts, historical records, and documents.
पॉज कर लें वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर्स लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the right answers. The duration of the coronation ceremony was 60 minutes. Say I'm Christian or say I'm jealous was spoken by Moba in Summer House. In an essay on man is addressed by Pope to Lord Bolingbroke. Maxwell was stabbed to death by Resendel. An essay on man is in fact a poem. The word annals mentioned in an elegy written in a country churchyard means historical records. ये हमारे पास आई गेस फिफ्थ पोएम है हमारी बुक की जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. ये उससे लिया गया है और इस कॉलेज के पेपर में वहां से 2 एमसीक्यूज पूछे गए. आई गेस आगे भी एक एमसीक्यू है जी मौजूद है. अगर आप इस पोएम के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं अलोंग विद द डिस्कशन ऑफ पास्ट पेपर्स तो पूरी पोएम के एमसीक्यूज आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आ रहा है उसके लिंक में मौजूद है. वो उसको क्लिक करके आप इसके पास्ट पेपर्स में कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं वो भी देख सकते हैं और इस पोएम के ओवरऑल एमसीक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. Hampden and Cromwell mentioned in elegy written in country churchyard were warriors, authors, parliamentarians, soldiers. Highland mentioned in the Salter Reaper are mountainous areas located in western and northern Scotland, western and northern England, western and northern Ireland, western and northern Wales. Each stanza of the Salter Reaper consists of 4 lines, 6 lines, 8 lines, 10 lines. The character was Belgian among the 6 hirelings of the Duke of Stelzner. Crofton है ये, Leongram है, Dechard है और Bersonin है. आपने करना यह है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लेने हैं और उसके बाद फिर आपने वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लेने हैं. एंड हियर आर द करेक्ट आंसर. Hampden and Cromwell mention in an elegy written in a country churchyard were parliamentarians. Highland mention in the Salter Reaper are mountainous areas located in western northern Scotland, western northern Scotland. Each stanza of the Salter Reaper consists of 8 lines and we call them octaves. The character was Belgian among the 6 hirelings of the Duke of Stelzner and he was Bersonin. Hopefully के सारे MCQs आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. चलते हैं फर्दर MCQs की तरफ. Marlowe performs this character in the silver box. Butler, detective, solicitor, charwoman. The phrase rose leaves used in music when soft voices die means rose stems, rose shoots, rose flowers, rose petals. The relationship between Joan and Max Wolf in the prison of Zenda was cousins, siblings, colleagues, class fellows. The French word tete-a-tete means private conversation between 2 persons, private conversation between 4 persons, private conversation between 6 persons, private conversation between 8 persons. ये फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश में भी इसे यूज किया जाता है. टेट-आ-टेट पढ़ते हैं हम इसे. टेट-आ-टेट जो है ये नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा में ये वर्ड यूज हुआ है जब रिसेंडल मिलने जाता है प्रिंसेस क्लॉविया से तो तब ये वर्ड यूज हुआ था नॉवेल में. ये उसी के बारे में पूछा गया है. Heaven does not always make the right men kings. This dialogue is spoken by Fred Sapp, Resendel, Albert. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने करेक्ट आंसर्स देख लें. Marlowe performs this character in the silver box. Butler. The phrase rose leaves used in music when soft voices means rose petals. The relationship between John and Max Wolf in the prison of Zenda was siblings. भाई थे दोनों और इसको मर्डर किया था रिसेंडल ने. ये पूरे नॉवेल में सिर्फ 2 ही बार इसका तस्करा आया है. उसके बाद है द फ्रेंच वर्ड टेट-आ-टेट means a private conversation between 2 persons. Heaven does not always make the right men kings. This dialogue was spoken by Freds. अमूमन इस वाले MCQ को एसोसिएट कर दिया जाता है सेप्ट के साथ. ये सेप्ट ने नहीं बोला था, फ्रेड्स ने बोला था. और कब बोला था? चैप्टर 21 की एंडिंग में जब रिसेंडल और फ्रेड्स इसे जो है फ्रंटियर तक छोड़ने गए थे और ये अपने मुल्क जा रहा था. ठीक है, तब ये बोला गया था एंड इट वाज स्पोकन बाय फ्रेड्स. होपफुली के ये क्लियर होंगे एमसीक्यूज. चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रोज के तमाम तर चैप्टर्स के एमसीक्यूज विद पास्ट पेपर्स डिस्कशन और सॉल्यूशन सुन लें, देख लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन मौजूद है और उस आई बटन में आपको प्रोज के तमाम तर चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है
उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आई बटन से आप क्लिक करके वो देख सकते हैं. If overproduced fears may be deceptive, imaginative, liars, false, Achilles, the great Greek warrior mentioned in Ulysses, was killed by Trojan king, army chief, militia, prince. This language was spoken in Britannia, French, German, English, Scottish. The long poems, essay on criticism, The Rape of the Lock were composed by John Milton, Shakespeare, Alexander Pope, G. Alana. उसके बाद है Schopenhauer was a German philosopher, warrior, psychologist, writer. पॉज कर लें वीडियो को और अपने आंसर्स लिख लें, और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. If overproduced fears may be liars, Achilles, the great Greek warrior mentioned in Ulysses, was killed by Trojan prince. This language was spoken in Britannia, that was German. The long poems, Essay on Criticism and Rape of the Lock were composed by Alexander Pope. Schopenhauer was German philosopher. होपफुली के तमाम तरह आंसर्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. चलते हैं हम आगे की तरफ. The statement to know English and not to read Shakespeare is a deplorable waste of knowledge as can be imagined. It was spoken by Dryden, Milton, Wordsworth, Tennyson. The word mastodons you mention in Reflections on the Reawakening East as a prehistoric animal similar to elephants, tiger, dinosaurs, zebra. Catherine was the daughter of Whitney, Harry, Will, and Phillips. John Milton's prose work Areopagitica deals with freedom of speech, human rights, equality, justice. Einstein believes that force always attracts man of low values, morality, ethics, etiquettes. तो पॉज कर लें वीडियो को और अपने आंसर्स को पहले मार्क कर लें, लिख लें, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप देख लीजिएगा. सॉरी, जरा वीडियो स्क्रॉल अप हो गई. थर्टी से आगे सब में स्टार्ट करना था ना. The statement to know English and not to read Shakespeare is as deplorable a waste of knowledge as can be imagined is spoken by this writer. किसने बोला था ये बोला था Dryden ने. The word mastodons mentioned in the Reflections on the Reawakening East is a prehistoric animal similar to elephants. Catherine was the daughter of Whitney. ये कैथरीन वॉज द डॉटर ऑफ विटनी. ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है स्पेसशिप 1. स्पेसशिप 1 चैप्टर से, जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, उससे लिया गया है ये, जो कि डिवोटेड फ्रेंड के बाद वाला चैप्टर है. ठीक है. उसके बाद है जॉन मिल्टन्स प्रोज वर्क एरियोपेजिटिका डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच. ये असल में एक पम्फलेट का नाम है, और इसमें इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और जो मीडिया या न्यूज की जो सेंसरशिप थी उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ लिखा था. तो ये उसके बारे में है. एरोपेजिटिका. Einstein believes that force always attracts man of low morality. होपफुली ये सारे एमसीक्यूज आप नोट डाउन कर चुके होंगे. चलते हैं हम आगे की तरफ. The Tang dynasty ruled over China during this period, 600 to 900 AD, 618 to 907 AD, 620 to 914 AD, 700 to 900 AD. This character bounded off the porch and started running at full tilt when the rumors spread about breaking of dam. Dr. Mallory, Lieutenant Colonel Edith Taylor, Thurber's mother. This person informed Rosendal that the keys of the drawbridge were kept by Michael Dechard, Bersonin है ये, John Maxwell.
There are this number of chapters in the Prisoner of Zenda, 19, 20, 21, 22. John Galsworthy and Anthony Hope belong to this profession, showbiz, teaching, law, medicine. अब आप अपनी वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स लिखें और फिर अपने आंसर्स को रिज्यूम करके, वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. The Tang dynasty ruled over China during this period 618 to 907. ये the reflections on the awakening east, reflections on the awakening east जो chapter है हमारा, उससे है ये MCQ. This character bounded off the porch and started running at full tilt when the rumor spread about the breaking of dam. He was Lieutenant Colonel. अच्छा ये the day the dam broke से है ये chapter, ये MCQ. This person informed Resendal that the keys of the drawbridge were kept by Michael. ये बात जोआन्ना अगेन को बताई थी. There are this number of chapters in the Prisoner of Zenda. 22 is the right answer. John Galsworthy and Anthony belong to this profession, law. Hopefully के सारे MCQs आप देख चुके होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे. चलते हैं फर्दर MCQs की तरफ और उसके बाद जो है फिर हम, बल्कि एक ही MCQ रह गए. Shakespeare belonged to this era: Puritan, Augustan, Reformation, Elizabethan. Everyone knows what's the correct answer. The correct answer is Elizabethan. This one is the right answer. ठीक है भाई, MCQs हमारे मुकम्मल हुए. अब हम बात करेंगे MCQs की, नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे सेक्शन बी की, क्योंकि MCQs हम मुकम्मल कर चुके. देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं सेक्शन बी में. सबसेक्शन 1 में है why is it insular for European historians to term the centuries after the fall of Roman Empire as the Dark Ages? Reflections on the Awakening East. How did Thurber's mother cope with the situation the day the dam broke? What is the synthesis that Liaquat Ali Khan believes is necessary for Pakistan to achieve? What is the main idea of Act 3 of the Silver Box? Poems mein hai, how does the upright man face the horrors of the deep and the terrors of the skies? How does Samson defeat his deadly enemies? What is the main idea of the poem Say Not the Struggle, Not to Will It? Why did Shakespeare call the last stage as second childishness? अच्छा, Prisoner of Zenda से सवाल है, what is the cause of a final fight between Michael and Rupert? Obviously she was Antoinette de Mauban. Compare and contrast any one of the characters, Princess Flavia, Mauban, Resendal and Albert. Discuss the last meeting between Princess Flavia and Resendal. ये वो chapter है जिसका नाम है Love for All. Chapter 21 है ये. Who was John and what role did he play in the novel? John जो था Max Wolfe का भाई था और ये बहुत ही खास नौकर था ब्लैक माइकल का और इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है, ठीक है, इस नॉवेल में और किंग की रेस्टोरेशन में. कॉलम मैचिंग देखते हैं. वॉल्ट्स है, हिदर्टो है, ब्लॉग आउट है, ऑक्सीडेंटल है, रेवरे है और इनकी जो मैचिंग है वॉल्ट्स की हो जाएगी, वॉल्ट्स के आगे होगा सेलर, हिदर्टो के आगे होगा अप टिल नाउ या अंटिल नाउ ज्यादा बेहतर है. ब्लॉग आउट का हो जाएगा रिमूव, ऑक्सीडेंटल का हो जाएगा वेस्टर्न और आखिरी वाले का हो जाएगा डे ड्रीम. याद रखिएगा अपने पेपर में करना है इस तरह से कि कॉलम ए को एज इट इज ही कॉपी कीजिएगा और कॉलम बी जब आप लिखेंगे तो राइट आंसर्स को वर्ड्स के फ्रेजेस के आगे लिख दीजिएगा. ये जो लाइन लगाकर आप कॉलम मैचिंग करते हैं दैट्स नॉट अ गुड वे. अगरचे वो भी कर सकते हैं बट ज्यादा बेहतर रहेगा आप इसको इस तरह से कह रहे हैं. सेक्शन सी में इन्होंने जो एसेस पूछे हैं, डिजिटल लिटरेसी है, साइबर क्राइम्स, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, PSL 7. आई फील कि PSL 7 जो है वो आ सकता है इस साल, ठीक है. सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट हीट वेव, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. फिफ्थ MCQ जो ऐसे है वो है टिप्स फॉर हेल्दी एंड हाइजीनिक लाइफ. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं जिसे इन्होंने कहा है चेंज द नरेशन. दे सेड व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक फॉर द स्किपर. वर्बली बता रहा हूं, सुनिएगा, ठहर ठहर के बोलूंगा, आप लिख सकते हैं आसानी से. They applauded that it was a remarkable comeback of the skipper. They applauded that
It was a remarkable comeback of the keeper. She said to them goodbye and see you again. ये हो जाएगा she bade them farewell and wished to see them again. Full stop. She bade, B-A-D-E, bade. She bade them farewell and wished to see them again. The manager said to his PA, ये हो जाएगा the manager ordered his PA to change his wristwatch, otherwise he would change him. The manager ordered his PA to change his wristwatch, otherwise he would change him. He said to Mary, ये हो जाएगा he asked Mary if she would not, ये wouldn't भी हो सकता है, if she wouldn't change her harsh attitude towards humanity. Full stop. दोबारा सुन लीजिए. He asked Mary if she wouldn't change her harsh attitude towards humanity. Fifth है, grandfather said a man is known by the company he keeps. चूंकि एक famous proverb है, tense change नहीं होगा, ये हो जाएगा grandfather said that a man is known by the company he keeps. और in the end आपके पास ये पैसेज है जिसको आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. अच्छा, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की एक वीडियो मैंने डाली हुई है कि आपने इसको किस तरह से डील करना है. उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको अपनी स्क्रीन के टॉप राइट पर शो हो रहा होगा. वहां से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इसको किस तरह से डील करना है. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये पहले दौरों में तो सारा अनसीन होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से ये सीन आ रहा है. और याद रखिएगा कि जो सीन जो हमारा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है या फिर पैसेज जो सीन आ रहा है, इसके लिए जो 3 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से एक का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवेकनिंग ईस्ट, दूसरे का नाम है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और तीसरे का नाम है द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. दिस इज इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और कॉलेज के पेपर के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.